So the number of active coronavirus cases in India has touched 445. The death toll has touched 10 now as 3 people died on Monday. Now, Himachal Pradesh reported its first death. This was a 69-year-old patient who died in Himachal's Dharamshala and had recently travelled to the United States. The other 2 deaths were reported from Kolkata and Maharashtra. 30 states and union territories have announced complete lockdown that covers 548 districts. Meanwhile, surpassing Maharashtra, Kerala became the worst affected state as active cases surged to 91 in Kerala. Maharashtra is the second worst affected and has 89 active cases. India's fight against novel coronavirus entered a new phase on Monday. A day after the central government advised lockdown in 75 districts of the country, some states implemented it in toto and some are doing it in phases. The national capital came to a standstill. By and large, people stayed indoors. There were few violators too. As Delhi goes under lockdown on the day one, how the violators are obstructing and destroying the purpose of the rules formed under the health emergency. Here the Delhi police on the road keeping not only a strict vigil but also ensuring that most of the people following the rules. However, on the first day, there are no challan, there are no penal action, there is no legal action. But very politely, the Delhi policemen on the road requesting every individual to follow rules. Those working in essential sectors were allowed passage. But they still faced teething problems on the first day of the borders being sealed. मैं करीबन आधा घंटा फंसा हुआ हूँ। मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ। अच्छा। इवन LNJP में हूँ। बट यहाँ पे कोई मतलब घर जाना है, फिर मुझे फिर से वापस ड्यूटी पे आना है फिर। मैं स्टेट बैंक में हूँ। अच्छा। तो अब वो उन्होंने बोला था कि एसेंशियल सर्विस में आता है इसलिए आपको आना है। हाँ। अब हम जा रहे हैं, हमको जाने नहीं दिया जा रहा है वहाँ पे। देखिए इतना लंबा लाइन लगा हुआ है कि जाके वहाँ पूछ भी नहीं सकते हम। The lockdown in Maharashtra, one of the worst hit states in India, was total. The lockdown which has been announced by the Maharashtra government, it seems to be working. The most of the vehicles there on the streets, what we could see, are of those people who are supposed to go to their offices. They are part of the essential services declared by the state of Maharashtra. The essential services comprises of the banks, the Bombay Stock Exchange, the services which provides the electricity, the telephone lines. Hundreds fled the city to return to their villages, only to be turned back. Tamil Nadu has ordered a lockdown from 6 p.m. on Tuesday, which meant Chennai is open on Monday. With Kerala witnessing spike in coronavirus cases, the Chief Minister announced on Monday a complete lockdown in the state till March 31st. The lockdown has sent hundreds of migrants into a tizzy. In Bihar, which ordered a lockdown, people climbed on buses to commute after train services was shut down on Sunday. Bihar government has announced lockout across the state till 31st of March to break the chain of corona and to fight this menace. And it's the first morning after the lockout has been announced in the state, and you can see that there are a large number of people on the streets of the state capital. Though there are several shops which are not coming under the essential services, many shops are closed. The centre has further tightened the shutdown. All flights have been grounded from Tuesday midnight. The motto for the nation is stay home, stay alive. Bureau Report, India Today. We're cutting across live now to what's happening outside Shaheen Bagh, where police deployment has been increased. A lot of speculation of whether the protest site is going to be cleared off.
Our reporters are on the ground getting you a live report. नहीं संक्रमण फैला था तो ऐसे में ये हमारे बच्चा दूध पीने वाला हमको छोड़ दो। यहाँ देखिए आप कवायद जो है लगातार की जा रही है और यहाँ पर खुद एडिशनल डीसीपी कुमार ज्ञानेश मौजूद है सर। ये कार्रवाई जो है अब एक्शन मोड में पुलिस आ गई है। ये बस कोरोना वायरस को देखते हुए जो डिफरेंट हम लोगों ने नोटिफिकेशंस आए हैं, किसी तरह की कोई गैदरिंग नहीं, उसी के तहत इसको हटाया जाए। सर सुप्रीम कोर्ट का जो पहले ऑर्डर है वो ऑर्डर अब तो नहीं आएगा क्योंकि अभी तो ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है और फिर आपको हम बाद में ब्रीफ करेंगे। कुमार ज्ञानेश हैं जो एडिशनल डीसीपी हैं पूरे इस एक तरह से कहा जाए इस पूरे इलाके में इनका दबदबा है और जिस तरह से पुलिसिंग यहाँ पर की गई है कई तारीफें हुई हैं। और अब आप देखिए यहाँ पर फिलहाल जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है। टेंट की प्रक्रिया जो है वो भी यहाँ से हटाई जा रही है, यानी शाहीन बाग एक तरह से पूरी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंट सभी उखाड़ दिए गए हैं। ये मैं अंदर से आपको तस्वीरें और दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ रिक्वेस्ट की गई थी प्रोटेस्टर से, कुछ प्रोटेस्टर्स मान गए थे। आप लोग प्रोटेस्ट में थे या दिल्ली पुलिस से? ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ आप देखिए तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं यहाँ से हटाने की कवायद जो है वो की जा रही है। सारी जो चौकियाँ हैं उनको यहाँ से अब उठाया जा रहा है और ये देखिए पूरी तरह से इस रोड को खाली कराने की कवायद लगातार चल रही है और हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर आप देखिए टेंट को हटाने की कवायद है। आप लोग प्रोटेस्टर्स नहीं पुलिस की तरफ ये आप देखिए पूरी तरह से यहाँ से प्रोटेस्टर्स को हटाया जा रहा है। कैमरामैन कुलवंत के साथ चिराग गोटी, दिल्ली आज तक। So that is a report that Chirag Oti has just filed for us, and you can see there that they are clearing up some of the tents that have been put up. Some of the protesters also being asked to vacate from the premises. The Shaheen Bagh protest has been on for months now, but looks like the police has decided to crack down considering the lockdown in Delhi and the fact that no mass gatherings are being allowed, keeping in mind the coronavirus outbreak. Several appeals have already gone out to, in fact, the protesters at Shaheen Bagh to end their stir, keeping in mind the health crisis in the country. However, now what we know is that there is a police presence there, massive police presence at Shaheen Bagh. Chirag Goti is getting you one more report from the ground. इस वक्त तो शाहीन बाग में मौजूद हूं। आप देखिए शाहीन बाग को बिल्कुल खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अपील की गई यहाँ लोगों से और कुछ लोगों ने उस अपील को भी माना है। यहाँ पर आप देखिए पूरा टेंट जो है उखाड़ दिया जा रहा है। इस रोड को भी अब क्लियर करने की कवायद जो है वो की जा रही है। ठीक जिस तरह से दिल्ली में धारा 144 लगी हुई है और ऐसे में संक्रमण का खतरा है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये कवायद जो है वो की जा रही है। आप देखिए यहाँ से दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, खुद लोकल लोग भी मौजूद हैं जो इसको खाली अपने आप ही जो है वो करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरह से संक्रमण की स्थिति पैदा हुई है, ऐसे में इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर सुबह सुबह भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया था। और आप देखिए यहाँ से पूरी जो प्रक्रिया है, टेंट हटाने की प्रक्रिया जो इस समय चल रही है और यहाँ कोशिश यही की जानी चाहिए कि कोई हिंसा की कोई स्थिति ना हो। और आप देखिए ये पूरी तरह से इसको खाली करा दिया जा रहा है और इस रोड को भी क्लियर कराया जाएगा। मैं आगे आपको दृश्य दिखाता हूँ। इस पूरे रोड को, यानी जो सारी गलियां हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया है। ये आप देखिए यहाँ पर सारी जो तमाम गलियां उनको ब्लॉक कर दिया गया है ताकि किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस जो है वो ना हो। ऊपर छतों पर भी पुलिस तैनात है, यानी हर एक जगह जो है वो पुलिस तैनात कर दी गई है और इस रोड को आज क्लियर कर दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से पुलिस का यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। खुद पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं और यहाँ एक तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये दृश्य है, ये आप देखिए उस तरफ काफ़ी लोग खड़े हैं और यहाँ पर जो है पुलिस फोर्स खड़ी हुई है और अपील लोगों से की गई है कि किसी तरह का कोई हिंसा जो है वो ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें। और जिस तरह से संक्रमण का खतरा बना हुआ है, उन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। और आप देखिए ये कोर्ट का ऑर्डर है, पुलिस का ऑर्डर है, जिसमें पुलिस ने धारा 144 लगा रखी है। ये कहा है कि लोग इकट्ठे ना हो, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शन जो है चल रहा था। लेकिन अब स्थिति ये है कि यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और यहाँ से आप देखिए तमाम जो कवायद है शाहीन बाग को हटाने की वो की जा रही है। और यहाँ देखिए कुछ लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है, कुछ लोगों को भी पकड़ा है पुलिस ने और यहाँ पर डिटेन किया है, लेकर जा रही है पुलिस कुछ लोगों को। इनका कहना है कि समझा रहे थे लोगों को, लेकिन यहाँ से आप देखिए पुलिस इनको डिटेन करके लेकर जा रही है। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं आपको पुलिस मैं लगातार यहाँ पर ये हमें ब्लेम क्या हुआ, आपको क्यों पकड़ा पुलिस ने? अब इनकी मर्जी है, जो चाहे कर सकते हैं भाई, इनका राज है। हम तो देखिए यहाँ कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, जो ये देखिए महिलाओं को भी डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं, देख लीजिए हमको पकड़ के ले जा रहा, मैं रोज आऊँ, हाय लगेगा इन लोग को हाय लगेगा। नहीं संक्रमण फैला था तो ऐसे में हमारे बच्चा दूध पीने वाला, हमको छोड़ दो। यहाँ देखिए आप कवायद जो है लगातार की जा रही है और यहाँ पर खुद एडिशनल डीसीपी कुमार ज्ञानेश मौजूद है। सर ये कार्रवाई जो है अब एक्शन मोड में पुलिस आ गई है। हाँ, ये बस कोरोना वायरस को देखते हुए जो डिफरेंट
हम लोगों ने नोटिफिकेशंस आए हैं, किसी तरह की कोई गैदरिंग नहीं, उसी के तहत इसको हटाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो पहले ऑर्डर है वो तो नहीं आएगा, क्योंकि अब नहीं, अभी तो ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, और फिर आपको हम बाद में ब्रीफ करेंगे। कुमार ज्ञानेश हैं जो एडिशनल डीसीपी हैं, पूरे इस एक तरह से कहा जाए इस पूरे इलाके में इनका दबदबा है, और जिस तरह से पुलिसिंग यहाँ पर की गई है कई तारीफें हुई। और अब आप देखिए यहाँ पर फिलहाल जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, और तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है। टेंट की प्रक्रिया जो है वो भी यहाँ से हटाई जा रही है, यानी शाहीन बाग एक तरह से पूरी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंट सभी उखाड़ दिए गए हैं। ये मैं अंदर से आपको तस्वीरें और दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। We'll continue getting you the ground reports from Shaheen Bagh. Looks like it's going to be cleared up today as Delhi is in lockdown. So let's get you a sense of the situation in the capital. A number of violations that have been reported, a lot of chaos on day one of the lockdown. The police in the capital have now tightened restrictions to prevent the spread of coronavirus. The police will issue curfew passes to persons associated with essential goods and services in the capital and in NCR. However, the identity cards of media persons will be treated as a curfew pass. These curfew passes will be provided at designated police stations to facilitate the necessary movement. The Delhi police warned that those violating prohibitory orders will face strict action. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal also asked people to remain indoors or face strict action by the authorities. To ensure the proper implementation of Section 144 CRPC in Delhi, interstate borders of Delhi with the neighbouring states shall be completely sealed by the Delhi police, except for the movement of essential goods and commodities. For movement of persons involved in essential goods and services, the concerned Delhi-based organizations have to get the curfew passes from their respective district police headquarters. And here's an exclusive conversation that we had with the Health Minister of Delhi, Satyendra Jain, on the lockdown in the capital. देखिएगा लॉकडाउन का मकसद आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये लॉकडाउन इसलिए नहीं है कि भाई आपको घर से बाहर निकलने पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आने वाली है, वो नहीं है। ये सिचुएशन दूसरी है कि जब लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, किसी को नहीं पता कौन कैरियर है इस वायरस का। अगर आप किसी से मिलते हैं और एक आदमी कैरियर है, वो 10 लोगों से मिलता है और दिन भर में वो 10, 20, 50, 100 लोगों को इन्फेक्ट कर देता है, तो ये एक्सपोनेंशियली एक्सप्लोड जब करेगा तो उसको संभाल नहीं पाएंगे। हम थोड़े से लकी हैं कि हमारे यहाँ पर देर से स्टार्ट हुआ, बट हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। आप इटली में देखिएगा, स्पेन में देखिएगा, शुरू में वहाँ पर भी 2-2, 4-4, 10-10 केस आ रहे थे, लोगों ने उसकी ज़्यादा चिंता नहीं की। फिर अचानक अब हज़ारों केस रोज आ रहे हैं, सैकड़ों की गिनती में लोगों की डेथ हो रही है। तो उसको रोकने के लिए देखिएगा, अगर ये चेन रिएक्शन रुक गया तो एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद ये बढ़ने से रुकेगा। सर, क्या जो लोग इसके बावजूद भी, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर ने भी अपील करा, आज चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने भी उसी पे ट्वीट करके कहा कि लोगों को इसको बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए, इसके बाद भी अगर लोग बाहर मिलते हैं जिन लोग एसेंशियल सर्विसेज के लोग नहीं हैं, उनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई भी करी जा सकती है? क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है? देखिएगा, पहले तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोगों से इसका पूरी तरह से पालन करें, और अगर नहीं मानेंगे तो फिर तो अरेस्ट भी किया जा सकता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। उसके अंदर सरकार पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि कारण क्या है कि एक आदमी की गलत उसकी वजह से उसको देख के 10 लोग और उसको प्रोत्साहित होते हैं, कहते हैं उसको कुछ नहीं हुआ, चलो हम भी चलते हैं, तो इस सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। आप इटली को देख लीजिएगा, अगर इटली ने आज लॉकडाउन किया हुआ है पूरे शहर को कई शहरों को लॉकडाउन किया हुआ है। अगर यही काम उन्होंने 2 महीने पहले किया, 1.5 महीना पहले किया होता तो शायद ये सिचुएशन नहीं आती। आज हमने लॉकडाउन किया है जी, अगर इस लॉकडाउन को हमने सख्ती से लागू नहीं किया तो हमारे को कल बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। उसके लिए हम तैयार नहीं है, हमें इसको सख्ती से लागू करना ही पड़ेगा। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट फिर से करूंगा कि बिल्कुल इसका पालन करें, और अदरवाइज आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, आपके खिलाफ FIR हो सकती है, आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। So in the national capital right now, there is a lockdown, and what the government has done besides adding on to the lockdown is saying that if anyone steps out despite being part of a non-essential service, there will be action against any violators. The reason the administration has taken this step is that they found that several people decided to venture out, decided to go ahead and violate the lockdown rules for no reason at all. And it is to ensure the safety of every single one of us that the government has decided, in fact,
to ensure that violators also face action. But let's also explain to you as to exactly what the difference is between a lockdown and a curfew. Yes, you know, at this point in the capital, it is a lockdown, and let's break down for you the difference. It will essentially mean, as far as a curfew itself goes, that there will be a direction to stay indoors. As far as a lockdown goes, the gathering of 5 or more people is not allowed in any part. Also, besides that, the difference between a lockdown and a curfew is that in a curfew, you will have to, in fact, stay indoors. Only essential services will be there. In a lockdown, at this point, they've only said that large crowds cannot gather at, in fact, outside your residence. And as we keep our focus on the capital and get you the latest on that lockdown, let's also get you the latest updates coming in from Maharashtra, which has been one of the worst affected from coronavirus. With 23 new cases being reported on Monday, the total number of active cases has risen to 89 in the state. In an attempt to contain the virus from spreading further, the state government has imposed a statewide curfew. Not just state borders, but district borders too have been sealed. Chief Minister Uddhav Thackeray has appealed to citizens to stay at home for their own safety in the wake of the virus. All essential services, including groceries, medical supplies, they've been exempted from the restrictions. In Dharavi, a 68-year-old woman who works as a help has been found positive for coronavirus, triggering fear of community spread. Authorities say that it is difficult to track who all the patient has met in the last 10 days, as the area itself is quite congested. Divyesh is joining us live from Mumbai. Divyesh, good morning. Just to explain to our viewers, is there any difference from the situation yesterday and the situation today? Are things more rigid? Is there going to be more action against anyone who steps out and violates the curfew? Akshita, let me point out that late evening release by the state government pointed that the number of cases in Maharashtra has risen from 89 to 97. One male, 35-year-old, who had a history of travel to Peru from Kalyan Dombivli. Another one from Mumbai, 38-year-old female, had a history of Abu Dhabi travel. One positive case, which is also suspected as a community which has happened due to spread from community, is a 33-year-old male in Thane. Another in Khandala, Satara, which is again history, which is a female, who is 45-year-old and has a travel history to Dubai. Then there is a family of 4 persons, which includes 3 male members and 1 female member from Islampur in Sangli, who had a travel history to Saudi Arabia. So these are the new cases, new 8 cases which have been found in Maharashtra, taking the number of affected persons who've been found positive of COVID-19 in Maharashtra to 97. So this is an alarming figure also, because of which the state is now under a complete lockdown. Curfew has been imposed. No inter-district travel has been allowed. If someone wants to travel from one district to another, he won't be allowed unless and until the listed cause is there, unless and until there's a medical emergency or they are part of essential services. They won't be allowed to move in out of any district. People have been asked to stay indoors, stay safe, so that the community spread could be decreased. Yes, and that is the focus right now of every government, to ensure that there is no community transmission. That is the next obvious stage of coronavirus, which is why it's so very important for every one of us to ensure that we heed the government's warning and the government's advice. Divyesh, thank you for joining us. Let's also focus now on what's happening in South India, where states have imposed stringent measures to contain the COVID-19 outbreak. Remember, Kerala is the worst affected state in the country, with 91 active cases and over 25 positive cases being reported on Monday alone. The Kerala government has swung into action and announced a complete lockdown till March 31st. The state government has sealed Kerala borders and public transport will not be available in the state. Only essential services will remain functional. Kasargod remains the worst affected district in Kerala. In neighbouring Karnataka, there have been 30 active cases, and this state too has announced a total lockdown. 7 cases were reported in the state in a single day.
Meanwhile, in Tamil Nadu, Chief Minister Edappadi Palanisamy has imposed Section 144 and suspended interstate transport as the number of active cases rose to 11. Andhra Pradesh has 6. Telangana has 32 active cases, and these two states have also announced a lockdown to contain the virus spread. Gopi Krishnan Unithan is joining us live with more details on this. Gopi, good morning. A lot of worry about exactly what the situation is like in Kerala, considering that it is the worst affected now, most number of cases being reported in Kerala. Any fresh steps that the government is taking? There's been a lot of appreciation for how the administration in Kerala has been dealing with this crisis so far. Well, very good morning, Akshita. As you were rightly pointing out, Kerala has now become the state with the maximum number of COVID-19 positive cases, with the total reaching up to 95. So this 95 includes the total positive cases and 91 active cases. 4 people have been discharged under various stages of treatment, and 1 fresh discharge came from Kannur last day. Now, coming down to the situation on the ground, Chief Minister has announced a complete lockdown in Kerala yesterday, and only essential services will be allowed to operate, is what Chief Minister has told. And also, we can see that the state government has started stepping up its health department, because they are trying to increase the facilities and numbers. Yesterday, the Chief Minister has said that the government has decided to induct 275 new doctors into the state government service within 24 hours. All of them have been served a notice. These are actually people or candidates who are in the list of PSC. All of them have been served a notice to present themselves before a video conferencing interview. And immediately after that, all these candidates will be inducted into the service, is what we have been told. And the state government at this point of time is still going through a sigh of relief that there is no community spread. But if a community spread is reported in Kerala, then things will get really, really difficult for the state government here as well. And that really is the focus, to ensure that it doesn't spread within the community. Gopi, thank you for joining us, and stay safe, because the number of cases in Kerala is something that is definitely very, very worrying. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.